Hello, students. I welcome you all to the second part of our third chapter, that is privatization. Now, before I begin, let me quickly recap the nature of Indian economy in the pre-reform era. Now, Indian economic policy after independence was influenced by the colonial experience, which emphasized on industrialization under state monitoring. So, we all know about Industrial Policy Resolution of 1956, where the major hold of industries was under the public sector. There was a state intervention in almost all the sectors. Business was regulated by the government. Also, Indian economy was a closed economy. License Raj was prevalent to set up business in India, which means that if a private sector, if a private industrialist wants to open an industry, he has to take a permission or license from the government in order to set up its industry, right? So license Raj was prevalent at that time. There were high tariffs also, and import licensing prevented foreign goods reaching the market. The central pillar of the policy was import substitution, the belief that India needed to rely on internal markets for development and not the international trade. So we were not allowed to import from other countries. Rather, we said that all right, we don't need to import from other countries. We will manufacture within India, right? So there was restrictions of foreign investments also. There were restrictions on technology also, and actually government controlled all the financial and capital markets. So, PSUs or public sector undertakings were considered as the engine of the growth, and there were restrictions on foreign direct investments in multinational companies, right? Now, so basically, prior to 1991, we all know that public sector was given a greater importance and priority, but the desired result could not be achieved. Now, most of the public sector undertakings started emerging as a social deadweight or a social liability rather than serving as an epicenter of growth and development. PSU बेसिकली और ज़्यादा इनएफिशिएंट और करप्शन PSUs में ज़्यादा देखने को मिला. हमको लगा था कि PSU ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ हमको लेके जाएगा, बट वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट देयर वाज लॉट ऑफ इनएफिशिएंसी एंड करप्शन जो PSUs में आना शुरू हो गया था. सो मैनी PSUs हैव बीन रिपोर्टिंग लॉसेज ऑल्सो. There were delay in implementation of projects leading to cost escalation. There was also a lot of inefficiency and extensive ineffectiveness on the management part, and many PSUs were overstaffed, resulting in lower labor productivity and bad industrial relationships, right? So in सब कारणों की वजह से we thought that privatization was considered as the only option इसको ठीक करने के लिए. So, accordingly, in 1991, the government decided to phase out public enterprises by selling its equity to the private entrepreneurs. Right? So, because of these problems, because of these inefficiencies, because of this corruption of the government sector, we started saying that all right, we really need to privatize now. Privatize मतलब हम जितना भी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो सारा ट्रांसफ़र कर देंगे प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर. एज वी आर सीइंग कि गवर्नमेंट सेक्टर इतना करप्ट हो रहा है, इतनी ज़्यादा लॉबिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, राइट? सो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. नाउ द कंट्रीज दैट परस्यू privatization are adopting a market oriented approach to development, right? So why do we go for privatization? So as to reduce the burden on the government, to strengthen the competition, to improve public finances, or say, let's say, to fund infrastructure growth, to reduce unnecessary interference of the government, to have a more disciplined labor force, right? So basically, I said that why we are doing privatization, because there are a lot of losses of PSUs, there is inefficiency, there is corruption. That is why we are privatizing. And what do we actually mean by privatizing? Privatization, it basically means the transfer of ownership, property and businesses from the government sector to the private sector. Basically, we are transforming all the ownership, property or business from the government sector to the private sector, right? And how can we do it? We can do it in two ways. One is that I can basically
बाय आउटराइट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। या तो मैं पूरा का पूरा सेल कर दूँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, या फिर बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। मिक्स्ड एंटरप्राइजेस मतलब वो हो गए जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो इसमें से मैं पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप निकाल दूंगी और खाली खाली बचेगा प्राइवेट सेक्टर, उसी को काम करना है। तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली जब मैं पूरा जो पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप है या प्रॉपर्टी है या बिजनेस है वो मैं प्राइवेट सेक्टर को दे देती हूँ। क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से हैंडल कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर एफिशिएंट, इट कैन हैव अ मोर डिसिप्लिन लेबर फोर्स। तो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। प्राइवेटाइजेशन मैं कैसे कर सकती हूँ? 2 तरीक़ों से। या तो मैं सेल कर सकती हूँ अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, या फिर मैं मिक्स एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट ओनरशिप को निकाल सकती हूँ, उठा सकती हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर ही बचेगा और वही सारा काम हैंडल करेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देन थिंक अबाउट एयर इंडिया एयरलाइंस। वो एक पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस है। नाउ वी ऑल नो दैट एयर इंडिया इज़ रनिंग इन लॉसेज, राइट? सो द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्पेंड thousands of crores in keeping Air India moving, and this debt-ridden Air India is struggling to find itself competitive in the aviation market. So the government had attempted to sell Air India last year, but it couldn't find any buyers. So it is now hoping to sell off the airline as soon as possible. All right, so let's proceed. Now let's talk about disinvestment. Disinvestment is basically when the government sells off the part of its share of PSUs to the private entrepreneur. So when I'm selling a part of my government share to the private investors, then it is known as disinvestment. All right. Now there are few types of disinvestment. So one is the minority disinvestment. Minority disinvestment मतलब हो गया when government sells only a small portion to the private sector. गवर्नमेंट के पास पूरा होल्ड है बट वो कुछ अपना होल्ड प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। माइनॉरिटी मतलब थोड़ा, तो वो थोड़ा पोर्शन अपना शेयर का प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब व्हेन गवर्नमेंट सेल्स ऑफ अ मेजर शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, राइट? अगर गवर्नमेंट अपना कुछ ज़्यादा ही शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है तो ये हो गया मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। टोटल डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गया? व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स टोटल कंट्रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा और पूरा का पूरा कंट्रोल किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? हम प्राइवेटाइजेशन कर ही क्यों रहे हैं? एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट द पर्पस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इज टू इम्प्रूव financial discipline and facilitate modernization by encouraging private sector to invest and participate in economic development with their administrative efficiency. We all know that जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं दे कीप ऑन इनोवेटिंग, दे कीप ऑन मॉडर्नाइजिंग, राइट? तो इन सब कारणों की वजह से हमने प्राइवेटाइज किया। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर and talk about Maharatna, Navratna, Mini Ratna. So now exceptionally there were some PSUs who were in profits, एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही जो हमारे PSUs थे उस सब में ही करप्शन था, सब में ही इनएफिशिएंसी थी। कुछ PSUs थे who were in profits and they were also providing mass employment to its people. So during the reform period our planners could identify such 9 PSUs. ऐसे 9 PSUs हमारे planners ने identify किए, hence the name Navratna. So if I break them up, if I break the word Navratna, so Nav means 9 and Ratnas means jewel या फिर हीरे या फिर diamond. So in order to improve efficiency or to infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalized global environment, the government identified these PSUs, these 9 Ratans, these 9 jewel of our country, and on the basis of their turnover, net worth and profits, declared them as Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. Now earlier, if a PSU wanted to purchase a share or buy something for its company, or if it wanted to invest somewhere, it had to take permission from the government, which used to take a lot of time and unnecessary delays or maybe an rejection of their proposal. Now this could hamper their growth, but
But if a PSU was declared as a Maharatna, Navratna, or Mini Ratna, it didn't had to take any permission from the government, right? So they were given autonomy, they were given independency in taking various decisions to run the company efficiently and thus increasing their profits. So these PSUs were important in terms of providing infrastructure and direct employment to the public. So that the quality end product reaches the masses at a very nominal rate, बहुत ही कम प्राइस पे लोगों के पास प्रोडक्ट्स पहुँचे. So the granting of the status resulted in better performance of these companies, right? Now let us look at some of the examples of Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. So at present there are total 10 Maharatnas, there are total 14 Navratnas, and total Mini Ratnas are 74. All right, so this could come that how many Maharatnas we have in total presently. So we have 10 Maharatnas, we have 14 Navratnas, and we have 74 Mini Ratnas. So Mini Ratnas are further divided into two parts, part 1 and part 2. Now basically in exam you may be asked in MCQs that identify which of the following is a Maharatna. So you'll be given 4 options and they will tell you that which one of these is a Maharatna, or they'll ask about these full forms, right? So you should know the important ones. So you just remember all the 10 Maharatnas, that is important. Navratnas, you remember few of them. So let's say Maharatnas, they'll ask what is the full form of BHEL. So it's Bharat Heavy Electricals Limited. This is categorized as Maharatna. ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Maharatna hai ye. Indian Oil Corporation Limited, Maharatna hai. SAIL, which is Steel Authority of India, is a Maharatna. NTPC is a Maharatna. Similar. So you just remember all of these so they can ask, right? Or they can ask, list 4 companies which comes under Maharatnas, right? Remember Navratna. So MTNL is a Navratna, right? A few important, which you can remember. So Hindustan Aeronautics Limited is a Navratna. Then Oil India Limited is a Navratna. Bharat Electronic Limited is a Navratna. Many Ratnas don't remember, there are 74. It is impossible for us to remember these, but yeah, 10 of the Maharatnas you should know, and Navratna's important one you should keep in mind. All right. So let us now move forward and talk about the case of privatization. And in this slide, we'll be talking about the positive impact of privatization and the negative impact of privatization. So first, let's begin with the positive impact. The first point says that it improves the efficiency of management. We all know if something is under private sector, obviously they'll be more efficient, right? So there will be no political pressures, or there will be no unnecessary formalities, and the private entrepreneurs are free to make quick decisions, and there will be no interference by the government, right? So obviously the efficiency of the management will improve if given the role of handling PSUs to the private sector. The second one is financial discipline. Now, by selling off industries can generate increased revenue. Obviously, if I am disinvesting, if I am selling a part of PSU to the private sector, I'll get something in return, right? So this revenue for the government, so I can use this revenue in order to spend more and more in our economy, right? The third one is competitiveness. Now, private sector shows better results in terms of profits, and they are more transparent, they are efficient, they are productive, and therefore private sector can provide the necessary push to the underperforming PSUs. And private sector actually encourages competitiveness, and it gives rise to innovation, right? So if you're competitive in the market, your good will be more your good will be classified as on the priority list. क्वालिटी का होगा आपका प्रोडक्ट, और प्राइस के मामले में भी बहुत कॉम्पिटेंट होगा. Then the next point is diversification of production, right? So diversification of production means that the private sector will function efficiently to satisfy the unlimited wants of consumers, right? So private sector कुछ ना कुछ innovate करके अपने products को diversify करता रहता है.
it tries to expand its production, it tries to maximize its profit. तो it basically as a customer अगर हम सोचे तो हमको बहुत सारे choices मिल जाते हैं choose करने के लिए, thereby increasing our standard of living and promoting our sovereignty, right? Now the next point is increase in FDI which is foreign direct investment. So FDI बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट होती है जो बाहर की कंपनी सपोजिटली हमारी कंपनी में करती है, ऑलराइट. एक कंपनी दूसरी, सपोज कंट्री ए है और कंट्री बी है, तो कंट्री ए की कंपनी कंट्री बी में जब इन्वेस्ट करती है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो वो शेयर्स खरीदे, सपोजिटली इफ़ अमेरिका वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ऑलराइट. सो दिस कैन बी डन इन टू फॉर्म्स. आइदर America can buy shares of that company which is in India, or America can itself build up a subsidiary company in our country, ठीक है. एंड जितने भी प्रॉफिट्स होंगे अमेरिका विल कीप अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स विद इटसेल्फ. और अगर यहाँ पे अमेरिका एक कंपनी सेटअप कर रही है तो ऑब्वियसली हमको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो दोनों को फ़ायदा होता है, राइट. सो इंक्रीज़ इन FDI कैसे हुआ कि पहले अब कोई हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा. वो तभी करेगा जब उसको लगेगा कि यहाँ अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तभी वो इन्वेस्ट करेगा. ऑलराइट. सो द मार्केट शुड बी अट्रैक्टिव फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट, राइट. तो अगर रिफॉर्म के पहले की बात की जाए तो पूरा पब्लिक सेक्टर ने एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ था. पूरी गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त हमारी इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा हुआ था. तो तब इन्वेस्टर्स को भी लगा कि वहाँ इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है, इतना कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, हम पक्का लॉसेस में ही जाएंगे. बट जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, देन दे थॉट ऑल राइट नाउ दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वी कैन फाइंड अ गुड मार्केट इन इट. सो लुकिंग एट द कंडीशंस इन इंडियन इकोनॉमी, दे ऑल्सो स्टार्टेड putting more and more, they started doing more and more investments in India, and hence there was an increase in FDI due to privatization. Now these were some of the positive impacts. Now let us look at the negative impact. The first point is neglect of social interest. We all know that private sector only work for profit maximization, and the private sector doesn't care about social welfare, right? So that is one of the most important negative impact of privatization. The second point is highly priced goods. Now the private sector actually functions on market forces पे काम करता है, market forces of demand and supply. So if prices are increasing, if there is an increase in price of the product, only those with the purchasing power will buy the product. But what about the others? तो जो रिच लोग हैं वही खरीद पाएंगे अगर प्राइस ज़्यादा है, तो पुअर लोगों का क्या होगा, सो देयर विल बी अ वाइडनिंग ऑफ इनइक्वालिटी. एंड सेकेंडली, व्हाट अबाउट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, राइट. अगर इन बेसिक सर्विसेज का भी, हेल्थ का भी, एजुकेशन का भी, ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा for the poor section, right? Now the third one is monopolistic control. Now if we are privatizing, तो private owners अपना एक monopoly बना के रख देंगे, पूरा monopolic control बना के रख देंगे पूरी market में, and this will actually lead to concentration of power in few hands. कुछ ही लोगों के हाथ में power होगा, right? And which actually will widen the gap between the rich and the poor, alright? The last point is hindrance in achieving the objective of full employment. Now, since the private sector work only for profit motive and it believes in cutting down its cost, तो वो अपना लेबर ले ऑफ कर सकता है बहुत ईजिली. उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके परिवार जिनको मैं नौकरी से हटा रहा हूँ, तो उनके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे. प्राइवेट सेक्टर डजंट केयर अबाउट दैट. उसको सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, उसको सिर्फ अपना सेल्फ मोटिव देखना है, राइट. सो इफ़ यू आर प्राइवेटाइजिंग, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर, अगर कोई पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड है तो उसको नौकरी से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है. ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को हटा देता है. सो अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि
प्राइवेट सेक्टर वैसे भी कॉस्ट कटिंग पे बिलीव करता है, वो ले ऑफ करता रहता है। क्यों? क्योंकि जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर को रिप्लेस कर देती है, राइट। तो जो काम 10 बंदे कर रहे हैं वो मशीन एक बंदा एम्प्लॉय करेंगे तो वो इक्वलेंट प्रोडक्शन हो जाएगा उस टाइम का, क्योंकि उनके पास मशीन है इंस्टेड ऑफ 9 लेबरर्स, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ privatization. All right, this is it for privatization. Thank you so much.